you should also look at an exit strategy. At the end of the day, the investment entity is supposed to be making investments with the purpose of, providing investment management services and with the objective of making a capital appreciation or getting a return on the investments. So what do you mean by an exit strategy? An exit strategy means that if you made investments, then you should also have a plan, which tells you that when are you going to exit out of those investments. But is it an exit strategy necessary? Are there any exceptions when investment entities may not have exit strategies regarding these investments? Let's find this out in this particular video. जो बच्चे सीए फाइनल की अपनी दिसंबर 21 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी पर आ रहा है अभ्यास बैच। दिसंबर 21 अटेम्प्ट के लिए ये बैच शुरू होने जा रहा है 15 सितंबर से, और इसके अंदर टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। मैं आपके साथ लूंगा सीए फाइनल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राहुल मलकान सर आपके साथ लेंगे एसएफएम, पुबली सर आपके साथ लेंगे लॉ, और खुशबू सांवी मैम आपके साथ लेंगी ऑडिट। इन फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए कहने के लिए ये फास्ट ट्रैक बैचेस हैं, लेकिन इसके अंदर आपके साथ कंसेप्ट की एक क्विक रिवीजन, जिसके अंदर माइंड मैप्स बनाए जाएंगे, लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए आपको काम आएंगे, और साथ में इसके अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप अपने दिसंबर एग्जामिनेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं और 2.5 महीने में अच्छी खासी तैयारी होगी। ये हमारे कुछ प्राउड लर्नर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्लासेस लेके ऑल इंडिया रैंक्स अचीव की हैं, जिनमें ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 और बहुत से बच्चे हैं। आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, बस केवल थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। इस बैच की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि एक सब्सक्रिप्शन और मल्टीपल सब्जेक्ट्स और मल्टीपल बेनिफिट्स आपके पास हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर कोई क्लैश ऑफ टाइमिंग्स नहीं है। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स पर आपका एक्सेस रहेगा, कोई व्यूज आपके लिमिटेड नहीं है। साथ में इसके अंदर आपकी हर 4th सेशन जो होता है वो डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज एडवांटेज मिलेंगे, सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि आप 3 मंथ्स की अगर सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो आपको लगभग 1 महीना और फ्री मिलता है, और इसके अंदर आप फर्दर 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। जो भी प्लान आप सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर आपको 10% अलग से और डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप ग्रुप 1 की प्लान कर रहे हैं तो ग्रुप 1 की अलग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ग्रुप 2 की अलग है, और अगर कॉम्बो ऑफर्स में दोनों ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन पर और भी फर्दर रिडक्शंस हैं, और 10% डिस्काउंट तो आपको मिलेगा। CAKB10 का आपने कोड लगाना है। तो भाई किस बात का इंतजार है, आइए लेट्स क्रैक इट। Well, as you can see in this clarification chart, what I've done, I've taken a few examples. This is not an exhaustive list of the exit strategies, but this is an illustrative list and giving you a very simple guidance in terms of the exit strategy relating to the investment entity. Now, the investment entities could have a different portfolio of investments. The portfolio of investments could vary in terms of equity investments, or maybe debt investments, or maybe perpetual, that is irredeemable debt investments, or maybe non-financial assets like, for example, a building. Now, if you notice in all these 4 items, you can see that my answer on the right hand side says, yes, you need an exit strategy, except in terms of the point number 3, and where I've highlighted in a red color the debt investments with a fixed maturity. Now, if you look at the investments in equity investments, or let's say you're looking at a non-financial asset, let's say a building, or an irredeemable debt investments, all these investments have you can say a long span of time. These investments can be made for an indefinite period of time. I'm not saying infinite, I'm saying an indefinite period of time. Now, in these kind of investments where the investments are for indefinite period, like you've got equity investments, or you've got irredeemable debt investments, or a building, for example, you definitely need an exit strategy.
But if you're making investments in a debt and that is with a fixed maturity, now the word fixed maturity indicates that there is already an exit plan because they're going to mature at a certain given point of time. So in those cases, we don't need an exit strategy. Isn't that pretty interesting? Making it one of the vital components that exit strategy is a necessary prerequisite, but we can see exceptions where it is not. That's all in this particular video. Thank you for watching. Take care and goodbye.